Good morning, students. Today our lecture number is 6 and today's date is 25th April 2020. Now, till we have seen what meaning of accounting, and yesterday we have seen what characteristics of accounting and accounting cycle. Okay, now today we discuss objectives of accounting. Now, what is objectives of accounting? So, हमको accounts क्यों prepare करना है? What is the reason behind it? What is the objective? Accounts बना के हम करेंगे क्या? तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स क्यों करना है, अकाउंट्स मेंटेन क्यों करना है. ओके, सो हियर आई हैव रिटन 9 पॉइंट्स. दिस 9 पॉइंट्स आर व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट, दैट इज परमानेंट रिकॉर्ड्स. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट? परमानेंट रिकॉर्ड. बट परमानेंट रिकॉर्ड किसका? सो परमानेंट रिकॉर्ड किसका करना है? ट्रांजैक्शन. कैसे ट्रांजैक्शन? तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? वी हैव टू रिकॉर्ड परमानेंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस in the books of accounts or in a computer. Okay, nowadays computer is used than the notebooks or books. Okay, now why we have to keep records of such transaction in books and computers? Because as we know, daily so many transaction take place in our business. हमारे बिजनेस में हर रोज बहुत सारे ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होते हैं और इन सबको याद करना बहुत मुश्किल है और यू कैन से इम्पॉसिबल, क्योंकि हम इतने सारे ट्रांजेक्शन याद रख सकते नहीं है. सो हम भूल ना जाए ये सब ट्रांजेक्शन, इसलिए हमको उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. और वो कैसे फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में. ठीक है. सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन अकाउंट? फॉर परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस. अगर हमने एक बार अपनी बुक्स में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है, सो आफ्टर 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, 10 years, 15 years, 25 years, 100 year also you will get this information from these books as and when it's required. हमें फ्यूचर में जब भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे पास हो सकती है. अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम सब जानते हैं कि हम कुछ चीजें कुछ साल तक याद रख सकते हैं, उसके बाद उसको हम भूल जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स का? टू मेंटेन परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कोई भी व्यक्ति हमसे कभी भी मांग सकता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है ना, तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए. नाउ सेकंड, दैट इज टू नो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. नाउ हियर व्हाट इज इफेक्ट? सो each transaction has two effect. First that is debit and second that is credit. और उस इफेक्ट से उसका हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है ना, उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है या हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता है. तो हमें ये जानना है कि इस ट्रांजेक्शन से हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट होगी, वो उसका एम है, यानी टू नो द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस. ओके, दैट वी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2 इन डिटेल. ओके, हियर यू हैव टू नो ईच ट्रांजेक्शन हैज हाउ मेनी इफेक्ट? Two effect. Which are they? One is debit and one is credit. Now what is debit? What is credit? When transaction is debited? When transaction is credited? All these things we will see in chapter number 2. Here you have to remember each transaction has two effect. Okay. Then third one, to know influential factors. Influential factor is what? The factors which affect our business. The transactions which affect our बिजनेस, यानी अकाउंट्स हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे. सो दैट वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट, टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस. ओके, देन टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी. नाउ व्हाट इज टैक्स? सो इन इंडिया इट इज रूल कि एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन हिज इनकम. So when we are doing business, we are earning what? Profit. Profit is what? Our income. So as a businessman, we have to pay tax to the government. But question is there, how many tax? हमें कितना टैक्स देना है ना? So टैक्स किसको देना पड़ता है? जो प्रॉफिट अर्न करता है. जो बिजनेस लॉस अर्न करता है उसको टैक्स देना नहीं है. लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? How we know we are making profit or loss? By preparing accounts through accounting. That is why accounting is important, to know the profit and loss of the business, and the basis of profit we determine the tax liabilities toward the government. Okay, so business में को कितना टैक्स पे करना है वो कैसे पता चलेगा? On the basis of profit. और प्रॉफिट कैसे आएगा? When we prepare accounts. Okay, so these are
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दैट इज टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटीज। ओके, गवर्नमेंट हर किसी से टैक्स नहीं ले सकता है, गवर्नमेंट हर बिजनेसमैन से टैक्स नहीं लेता है। किससे टैक्स लेता है? जो बिजनेस में क्या करता है? प्रॉफिट। जो बिजनेस में लॉस करता है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज टू नो द क्वांटम। क्वांटम मींस व्हाट? साइज ऑफ पेबल्स। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड what is payables. Payables means what? In business sometime we purchase goods on credit, यानी हम उधार में कुछ चीजें लेते हैं। उधार में यानी अभी हमने गुड्स तो ले लिया है लेकिन उसका पैसा हम फ्यूचर में देंगे, अभी देंगे नहीं। ओके, सो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज आवर टोटल पेबल्स, हमने पूरे साल में कितना उधार में परचेज किया है वो अगर हमको जानना है तो कैसे पता चलेगा? थ्रू मेंटेनेंस अकाउंट्स। हम अकाउंट मेंटेन करते हैं हर एक इंसान का जिस हमने क्रेडिट में परचेज किया है। ओके, सो टू नो अवर साइज ऑफ पेबल्स it is necessary to prepare accounts, otherwise it is not possible to remember। हम याद रख सकते नहीं है कि हमें इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, ठीक है? तो that is why accounts is necessary। Then next point is what? To know the quantum of receivables। Again quantum is what? Size। Receivable is what? When we are purchase goods on credit it is our payables, यानी हमको किसी को पैसा देना है। Same way when we are selling goods on credit we have to receive money from the customers, यानी हमें लोगों से पैसा लेना है, यानी हमें जो लोगों से पैसा लेना है वो क्या है हमारे लिए? रिसीवेबल्स, यानी हम उनसे इतना पैसा मांगते हैं। तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल दिस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हमें किसको कितना बेचा है, कितना क्रेडिट में सेल्स किया है ना? सो फॉर दिस वी रिकॉर्ड्स अकाउंट्स ऑफ रिसीवेबल्स, और इस तरह से हम एट द एंड ऑफ द ईयर हमें लोगों से कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा लेना है वो जान सकते हैं। That's why we need accounts, and that is the objective of accounting, to know the receivables of the business. Okay, but when receivables and payables are there, when we are doing transactions on credit, now there are two types of transaction, cash and credit। Cash means what? अभी परचेस किया, अभी पैसा दे दिया, अभी सेल किया, अभी पैसा ले लिया। क्रेडिट मीन्स व्हाट? अभी परचेस किया लेकिन पैसा भी देना नहीं है, कब देना है? फ्यूचर डेट, यानी कल परसों, है ना? और क्रेडिट सेल्स यानी क्या? अभी गुड्स दे दिया लेकिन पैसा कब मिलेगा? फ्यूचर में, यानी कल के बाद। ओके, सो टू नो द रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स वी हैव टू मेंटेन अकाउंट्स। देन नेक्स्ट इज व्हाट? टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? एज आई डिस्कस एंड आई टोल्ड यू एवरी बिजनेसमैन इज डूइंग बिजनेस फॉर व्हाट? टू अर्न प्रॉफिट। हमारा मेन एम क्या है बिजनेस करने का? टू अर्न प्रॉफिट। बट हाउ वी कैन नो वी आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस? बाय मेंटेनेंस अकाउंट्स। हम अगर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो ही पता चलेगा कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सो दैट इज द वन आल्सो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज व्हाट? टू मेजर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है वो जानने के लिए। एंड 8 is what? To know the economic status of the business. Now what is economic? So whenever you see economic means it is related with fund, money, पैसा, यानी कि हमारा बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं कि लॉस करते हैं? हमारा स्टेटस क्या है? स्टेटस यानी फाइनेंशियल स्टेटस। स्टेटस यानी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे पास कितने पैसा है, हमारी कंडीशन कैसी है। ओके, सो थ्रू अकाउंट्स वी कैन नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, यानी कि हमारा बिजनेस में कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो हम जान सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हमारी असेट्स हमारी लायबिलिटी से ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? अच्छी है, यानी अवर इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड। बट व्हेन our liabilities is more than our assets, in this case our economic condition is not good. So we can know our assets and liabilities through accounts, and on the basis of these assets and liabilities we can determine the economic status of the business. Okay, so these are 8 point. Now ninth point क्या है? To detect and avoid errors and frauds। अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होगी? एरर्स तो होने वाली है, गलतियां तो होगी, लेकिन हमने गलती की है वो कैसे पता चलेगा? थ्रू अकाउंट्स, अगर हमने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो। दूसरा फ्रॉड, अगर हम बिजनेस करते हैं हमारे बिजनेस में फ्रॉड होता है ना? फ्रॉड होता है हम कैसे जानेंगे? थ्रू अकाउंट्स। अगर हम अकाउंट मेंटेन करेंगे सो वी कैन डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, और इस तरह से हम अपने बिजनेस को इससे बचा सकते हैं, ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। ओके, now these all are what? Objectives of
accounting. Okay, you just write down these 9 points in your notebooks. Okay. Okay, now today we have discussed what objectives of accounting. Okay, now tomorrow we'll discuss advantages of accounting. Okay, so you have to write out these notes in your notebooks and see you tomorrow. Okay, thank you and have a nice day.